press the bell icon for all the updates. एवरीबॉडी, आप लोगों ने टीजर देखा या नहीं? नहीं देखा ना? तो अभी देख लेना और बताना कैसा लगा। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे लाइफ पे पिक्चर बन रही है। आई विश आई कुड हैव बीन देयर विद यू ऑल, बट आई एम शूटिंग आउट ऑफ इंडिया राइट नाउ। मैंने पिक्चर के सीन्स देखे हैं एंड आई कांट बिलीव दैट हाउ रणबीर इज लुकिंग लाइक मी। राजू, मुन्ना भाई में रणबीर को मत भेजना, समझा? Enjoy yourself, enjoy the teaser. Thank you for watching the teaser. Over and out from Kyrgyzstan. Thank you. Finally, the most talented producer in India, a man of many, many talents, Vidu. यार चल रहा है। पहले तो मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। ये पिक्चर भी राजू ने प्रोड्यूस की है। मुझे जब ये राजू और अभिजात मेरे पास आए पहले, मुझे लगता है कि कल की बात है, पर इन्होंने आके ये गए थे मुन्ना भाई बनाने के लिए इसके घर, संजय के घर। तो मुन्ना भाई पे रिसर्च चल रही थी, तो ये लोग दोनों आके मुझे कहते हैं, सर हमारे पास तो मुन्ना भाई से भी बेटर एक सब्जेक्ट है करके। तो आई वाज शॉक्ड। ऐसे व्हाट? कहते हैं संजय दत्त की बायोग्राफी। तो मैंने इमीडिएटली कहा, पागल हो गए क्या तुम लोग? मतलब संजय दत्त क्या? व्हाट? संजय दत्त की लाइफ में है क्या जो तुम उसकी फिल्म बनाओगे? मतलब उसको ग्लोरीफाई करोगे? करोगे क्या उसका? उससे बेटर मेरे पे बना लो फिल्म यार, मेरी बेटर है लाइफ उससे। तो देन दे स्टार्टेड टेलिंग मी द स्टोरी एंड स्लोली एंड स्टेडीली आई डिस्कवर्ड संजय दत्त that frankly I didn't know. I discovered a Sunil Dutt that I didn't know, and this is coming from a man who knew them for 20-25 years. First time मुझे पता चला कि मुन्ना भाई में जब वो सीन हो रहा था, जब दत्त साहब संजू को पकड़ के रो रहे थे और मैं वहाँ सीन पे खड़ा था और मैंने उनको कहा कि दिस इज़ वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंसेज दत्त साहब। मुझे ये पता नहीं था कि ये बाप बेटे सच में रो रहे थे और एक्टिंग नहीं कर रहे थे। तो जब वो सब बातें मुझे पता चली, तो मैंने वो संजय दत्त और वो सुनील दत्त की कहानी, वो उनको डिस्कवर किया जो मैं जानता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं। और ये कहानी ऐसी है कि मैं, अब आप सब मीडिया के लोग हैं, कितने हीरो लोगों के कहाँ कहाँ क्या चक्कर चल रहे हैं आप सबको मालूम होगा। कोई बोलता नहीं है और जो मीडिया होता है दोस्त उनको छुपा भी देता है। ये आदमी ने बैठ के हमको सारी अपनी कहानी बताई, ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमने इसको कहा, भैया हम ये छाप देंगे सिनेमा में तो आप ठीक है, यू आर ओके विद इट? ही सेड यस, एंड वी हैड टू एक्चुअली टेक अ लीगल थिंग कि भैया हम सब बता रहे हैं। तो ये ऐसी कहानी है जो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं शुरुआत में तो बिल्कुल इसके खिलाफ ही था कि ये फिल्म बनाओ। And today I stand here very proud of the film Raju Hirani has made. Extremely proud because I've seen the film of what Abhijat has done. And it's just one of, really speaking, you know, making a biopic is very difficult. महात्मा गांधी पे बायोपिक बनाना बहुत आसान है क्योंकि आप महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक बायोपिक या संजू पे कहानी नहीं है, ये बाप बेटे की, मीडिया की, बहुत इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिस्कवर करेंगे जो मैंने की है। कौन हीरो बताएगा कि 308 गर्लफ्रेंड थी उसकी? कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये जो कहानी है, इसका जो लास्ट बोर्ड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ये ख़त्म हुआ, ये मैं चाहता था कि टीज़र के बाद आपको बताऊँ, तो मैंने इनको कहा यार संजय दत्त प्ले कौन करेगा? फिर जब इन्होंने मुझे रणबीर कपूर के टेस्ट दिखाए, तो एक्चुअली I couldn't believe that this is Ranbir Kapoor, and I know Sanjay. I mean, personally, and I think you know that, and you will discover it in this movie, he's perhaps one of the best actors we have in this country. Absolutely. And I'm not the guy who would just say that. He's probably the best we have. And to say that, why I'm saying the best, I think his choice of scripts has been very stupid. So you should know that I'm telling you the truth. But he's absolutely one of the best. What he's done in this film is unbelievable. What Raju has done with him, what Abhijat has done with him, is just unbelievable. So I will call Abhijat now.
and then we will present Raju and Ranbir to you. Come, Abhijat. He's the writer. It all starts with him. Thank you, ladies and gentlemen, for being here. And I'm very quickly going to share three things that happened from the time I started working on this movie. Three most amazing things that I've seen in my professional life yet. The first was, of course, the story. As we confronted the story of Sanju, and as we started putting it together, we started realizing that it was the most astounding tale that we had ever come across. In a short while, in about a couple of months, we had 725 pages of a transcript. Usually I and Raju go on a walk trying to figure out how to create a scene. Here, what are the scenes that we would be able to keep in a movie like this? So it was just stunning. And the variety was unbelievable. It's like you're reading a novel of Dostoevsky, dark and deep, and suddenly a chapter from P.G. Wodehouse comes in. Or you're reading or watching Apocalypse Now, and suddenly a Groucho Brother Marx or a Laurel Hardy reel comes in. It was goofy, it was dramatic, it was unbelievable. So this was the first miracle. I'd never encountered a story like that in my life. Second thing that I saw, that there was a man who could actually play this character in all its facets. Ranbir, he stepped in, and not only the body language, not only the voice, but he got and captured the soul of Sanju in all the eras that are depicted in the film. All 6 looks, it's not just the looks, he found a deeper core. And so far, we had only heard the legends of a Ben Kingsley getting into, the role of Gandhi, or a Daniel Day-Lewis playing Lincoln, how he prepared for it, or a Dustin Hoffman checking into a hospital to research Rain Man. These are legends that I'd only heard about. For the first time in my life, I saw a young Indian actor do it. And it happened before my eyes, and it's one of the great privileges of my सर professional इसके लिए life. तालियां बजा दीजिए प्लीज. ये जो इसने कहा है इसके लिए I would like people to acknowledge this. Thank you. And the third and the most amazing miracle, in a way, was I saw Rajkumar Hirani's art and craft evolve into something richer. I won't say changed. It evolved. My father has always said that Raju's films have 3 things. 3 E's, as he puts them. He says they are entertaining, enlightening, and elevating. Finally, your spirit is lifted. Without losing an ounce of the drama or the grit of Sanju's story, Raju has been able to maintain the entertaining, enlightening, and elevating aspects of his craft. And that is... भैया थोड़ी जोर से बजाओ. राजू के बजाओ. And that's a complete miracle that he has finally, one more time, although the teaser is saying 308 girlfriends, he has made a film which is for the Indian family. People will see it on Friday and they'll say that on Monday I want to take my mom and dad for it. So I invite the one and only Raju Hirani. Please come. Hello, good afternoon, everybody. Thank you so much for being here. Where's Abhijat? Yeah. Thank you, Abhijat, for all the praise. You said it exactly the way I wrote it for you. Actually, I don't want to say much because आप लोग सवाल तो पूछेंगे बाद में. So all I want to say is why we made this film, which actually Vinod has just said. Abhijat has given the reasons. But I'll also put it slightly differently. When we met Sanju first time,
आप लोग कभी जैसे वीडियो लाइब्रेरी में जाते हैं ना, एटलीस्ट मेरे साथ होता है, मैं वीडियो लाइब्रेरी में जाता हूँ तो मेरे साथ ये होता है कि कौन सी फिल्म उठाऊँ। ऐसा लगता है यार ये बड़ा एक एक्शन फिल्म ये उठाते हैं, इधर कॉमेडी है ये उठाते हैं, ये इधर ड्रामा है ये उठाते हैं। संजू ने जब अपनी कहानी सुनाई तो मुझे ऐसा लगा मैं वीडियो लाइब्रेरी में बैठा हूँ जहाँ पे अलग अलग किस्म की फिल्में चल रही हैं। सो एज फिल्म मेकर्स वी ऑल जस्ट ग्रीडी फॉर ग्रेट कंटेंट, और मुझे लगा वो कंटेंट मिला संजू की कहानी पे, एंड ही वाज ब्रेव इनफ टू से कि जैसे बोलना है आप बोल दो. So I think that's the primary reason we've made this film, and I hope you'll all will enjoy it. We've had a great time making this film, and I'll just take this opportunity to thank all the people who've been with me on this film. As Vinod keeps saying all the time, cinema is such a collaborative effort. अकेले कोई फिल्म नहीं बनाता, सबके साथ मिलकर फिल्म बनती है. तो I had a wonderful team, wonderful bunch of actors. रणबीर तो आपने अभी देखा. You will see also when you see the film, he is not mimicking. It's very difficult to play this role because ये बायोपिक किसी ऐसे इंसान की नहीं है जिसकी शक्ल आपको नहीं पता है. कुछ बायोपिक्स होते हैं जो आपको लोग पता नहीं है. Sanju is there in your face. To play Sanjay Dutt, who everybody has seen, and not look like mimicry, not look like caricature, was a great thing. So I think Ranbir has done a fantastic job. We have some wonderful actors, Anushka, Sonam, Parishji, Diya, Jim, my dear friend Baman. You'll see all of them gradually when we release the trailers then. And my wonderful crew of Ravi, Shashank, I can see some of them here, Bishwadeep, Jeetu, Sanjeev is here, Mukesh bhai यहाँ बैठे हुए हैं, Abhijat of course, Sanjay, Bishwadeep. अच्छा कुछ नाम भूल जाऊंगा इसलिए सारा नाम लेता हूँ. I couldn't have made this film without this wonderful bunch of my DAs, my production team. So thank you so much, everybody. And let's meet now the man of the hour, Mr. Ranbir Kapoor. Hi, good afternoon. Thank you for being here. I'll keep this really short and sweet. Ever since I can remember, I always wanted to be a part of movies and show it to the world. And to get an opportunity like this to work with such beautiful geniuses is really a luxury, a privilege, and an inspiration of sorts. Thank you, Vijay sir. Yeah. Thank you, Fox, for always trusting me, for providing me with a platform. Thank you, Vidhu sir, for being such a strong pillar of support to the film, to Raju sir, for being such a strong critic, Bhushan sir, for all the support that you give every film, Abhijat sir, for your genius mind, and also for the fact that the support and confidence you give everybody on this film. The positivity that you gave was quite amazing. And Raju sir, apart from being the greatest director ever alive, just to be my friend, to understand what goodness is, and to kind of teach me what entertainment means, what value of money means, what entertainment for an audience means. I think that kind of knowledge is the most valuable knowledge I've ever got. So thank you, sir. And the entire cast and crew, I guess the cast is not here, but the crew is here. Thank you so much for being part of this journey. Thank you. हाय रणबीर सर, आपके लेफ्ट में आलोक है. Hello. सर टीज़र बेहतरीन है एंड इतना सब कुछ देखा, दोबारा भी देख सकते हैं. एक बार संजू बाबा की तरह कुछ अगर आप बोल सकें, क्योंकि सब कुछ मंत्रमुग्ध कर दिया आपने इस टीज़र के दौरान, तो 2 लाइन. मैं उसके लिए एक्चुअली आप ट्रेलर के लिए वेट करना, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म की बातें होंगी. बट मुझे थोड़ा आई फील वेरी शाय, बिकॉज आई फील कि उनकी नकल उतारना इट कुड बी डिसरिस्पेक्टफुल. क्योंकि जब हम फिल्म करते एक कैरेक्टर है, इतने सारे चीज़ें होते, कॉस्ट्यूम होता है, हेयर मेकअप होता है, और उसकी वजह से कुछ पर्दे पे नज़र आता है. सो आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट संजू सर, क्योंकि कभी कभी जब नकल उतारते तो लगता है कि ही इज ट्राइंग टू मिमिक हिम. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. एंड मैं कर सकता हूँ बोलेगा. हाँ विदु सर प्लीज. आता नहीं है यार. Can I say something? Alok? Thank you. Raju, hi. Hi, Vardi. Congratulations to you and to Ranbir. I mean, it's amazing the way you look like Sanju. It's really astounding. Congratulations to both of you. Thank you. Ranbir, I wanted to ask you. You've always known Sanjay Dutt, of course, right from the time you were born. But when you came on board to do this film, did you go out of your way to observe him, maybe see his films, maybe, try to see what his mannerisms are like? So did you go out of your way to do a little bit of homework? Ma'am, there were a couple of things. Firstly, I've always been a Sanjay Dutt fan. So for me, it was a fan trying to play his icon on screen. So I think the
the hardest work that I had to do is give myself confidence that I can play this man. Because I remember when Raju sir told me about this film, I just didn't have confidence because I felt I wouldn't be able to do it. I don't have the courage, I don't have the understanding, and I don't have the acting chops to do it. So this is not an acting gig for me. Like, I don't think I've tried to show good acting or bad acting or showcase my talent. I think it was just the opportunity to be part of a story of somebody who I consider my icon, who I consider a very flawed person but a good person. And to tell his story and to be him was quite incredible. So did you observe him? That's what I want. I've observed him all my life, you know. We So all have so you tried to... didn't particularly go out of your way to No, I observe did. him I did after try. you- I mean, ma'am, I try to do this for every film. There's a character that you play. Fortunately or unfortunately, we have a character which is so relevant. Even, he's pop icon. He's pop culture. And so it was scary, but I think with the kind of brilliant men sitting on stage right now, with their help, it made it much easier for me. Thank you. Thank you. And राजू सर, जब आप शूट कर रहे थे, थोड़े रैशेस भी देखे होंगे संजय दत्त सर ने, उनका क्या रिस्पॉन्स था, थोड़ा वो बताएं. संजू का में एक फिल्म में एक सीन है जिसमें, क्योंकि मुन्ना भाई ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ हिज स्टोरी, दैट वाज द टाइम दत्त साहब ने पहली बार संजू के साथ एक फिल्म की थी, तो उसका थोड़ा सा अंश फिल्म में है. तो उसमें एक सीन है जिसमें रणबीर इज प्लेइंग मुन्ना भाई. तो मैंने बड़े एक्साइटमेंट में संजू को, वो स्पेशल इफेक्ट होकर क्लिप आया था, वो संजू को दिखाया. तो मुझे लगा संजू रिएक्ट करेगा, कि जिसको मैं दिखाता था सब कहते अरे बड़ा अच्छा यार, देखो कैसा लग रहा है. तो संजू ने ऐसे देखा और कोई रिएक्शन ही नहीं दिया. तो मैंने कहा संजू सी इट अगेन, वो सामने से देखो, फिर से देखो, क्लोजली वॉच इट. अगेन ही सॉ इट, अगेन ही डिडंट रिएक्ट. तो आई सेड संजू क्या हुआ, यू डिडंट लाइक इट? तो ही सेड आई डोंट थिंक दिस इज वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी. Of course, he said it jokingly, and so he's seen some parts of it, and I think he gets overwhelmed कि मेरे लाइफ में फिल्म बन रही है, उसी पे वो right now is in that zone. एंड मिस्टर विजय एंड विदु सर, किस तरीके का ये कोलैबोरेशन है? 2016 से देख रहे हैं कि फॉक्स अलग अलग At Fox to be working with this very, very talented team. They're not an easy team to work with. But they are brilliant. मेरी And- तरफ देख रहा हो. ये पूरी नजर इधर आ रही. But I think as I said, it doesn't get better, and I think, we're very, very honored to be part of this team. Thank you. Hi, Mr. Raju. On your left, this is Faridun. Faridun from Bollywood. Hi, hi. It's an incredible promo. As I think Abhijat said a short while back, there are 3 E's to define you: entertainment, enlightenment, and uplift. I think there's one more E as well. So one thing which is very, very, very interesting is that even the serious situations in the promo, you've presented them in a humorous and entertaining manner. Those situations, some of the situations are really, really serious for the matter. How crucial it's always been. Screenplay is very important for you. What is the entire experience of just working on the screenplay of this movie, sir? See, in this journey, I figured out that biopic is a different monster altogether, because you don't have total control over it. When you're writing a fresh screenplay, fiction, you have control over it. कि आपका कैरेक्टर है, आप उसको जैसे चाहें, जिस दिशा में चाहें आप लेके जा सकते हैं. With a biopic, you have to be true to what has happened in the life. So it needs a different kind of a craft, which we discovered. कि we have to do it in a different way. But the good thing is Sanju gave us the kind of things that have happened in his life. If we were to write it from imagination, I don't think we would have ever been able to write it. So he gave us all the anecdotes, which we had to finally string together. So this time it was more a journey of how do we string these things together. So we've chosen the things. आपकी पर्सनल चॉइस होती है, हर फिल्म मेकर एक ज़िंदगी से कुछ अलग अलग चीज़ें उठाएगा. तो जिस किस्म की चीज़ें हमें पसंद है, हमने वो उठाई है. आपको एक सेम्बलेंस पूरी फिल्म का मिलेगा संजू के साथ जो हुआ, बट आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ह्यूमन स्टोरीज. तो मुझे एक दोस्ती की कहानी दिखी, इसमें एक फादर सन की कहानी दिखी. तो these are the aspects people don't know. Rest of this story people know. So this is the way we've walked this path more than anything else. Ranbir, one thing which is very, I think, very important about Sanjay Dutt is that, as you mentioned yourself as well, that there's flaws as well, and he's someone who's hugely loved. Fate has played an important role. His mother passed away, his wife passed away as well. Now, one thing which is very, very notable about his face has been, it's a very, very public face, that's the vulnerability. His face has always carried that vulnerability. What sort of efforts maybe have you done in terms of bringing that on the face?
I mean, to understand his story, firstly. देखिए जब आप मेकअप करते हो, कॉस्ट्यूम में आते हो, that's the easy part because looking like someone is no big deal, you know, it's just resemblance. But to understand a character's soul, to understand where he came from, was a little hard initially. So we had good prep time on the film. But जहाँ vulnerability का सवाल है, I guess you have it or you don't have it. It's in the material, and you just have to be true to yourself as an actor. You have to understand it, you have to be intelligent, and just express yourself. Hi Ranbir, Nirima here. First of all, the teaser is amazing. जैसे राजकुमार हिरानी साहब ने कहा, action, comedy, drama सब है शायद इसमें. Which was the most toughest part for you to play? I think to give like I said earlier, to give myself confidence that I can play this part. I think that itself, एक बार वो हम पार कर चुके, then it became really, you know, it was amazing because I was inspired, I was having fun, I was working with the best in the business. Then every scene, you know, if there was a hard scene, और मजा आता था कि, you know, I want to perform this. You know, how can I approach this? So the harder the scene, the better it was for me as an actor. See, इसने पहले मुझे फ़ोन पे कहा था, I still remember that phone call. कहता है सर कुछ भी करने को कहना, वो संजय दत्त का रोल करने को मत कहना. You remember that call? I told Raju कि तो ये मतलब he's come from that kind of thing and finally reached here. So it's quite an amazing thing. Good afternoon. And Hi, Ranveer. on the story front, I think somebody was asking, I just wanted to add a thing, that there are many scenes in the film. There are stories that Raju and all told me that I couldn't believe were true. So I actually told them कि पता करो, चेक करो, ये ऐसा हुआ कि ऐसा ठोक रहा है हमको, क्योंकि ऐसी इसकी लाइफ है कि आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा. Abhijat can tell you one that story that Obama. Unbelievable. You know, It's not there in the film, but it's a story. yeah, it's an episode like many that we could not finally keep in the movie. But he told us casually that, Barack Obama knows him as Munna Bhai. And my eyes popped out. And I checked the time of the night to gauge how drunk he was, etc. Because it was simply unbelievable that Obama would know him. I'll add to it. He said, of course he said this, but he said once I had gone to Chicago and we were there for an event. Obama was there and I was also there. And when people saw me, they left Obama and ran towards me saying it's Munna Bhai. So we both thought he was drunk. Then you can continue. Yeah. And so he had mentioned an event, and I started tracing that event back, and I got the Chicago Tribune of that day, 16th of August, 2003. And lo and behold, 2004, 16th of August 2004. And lo and behold, it was there. It was there in the paper that Barack Obama was the governor, and he was on the Dearborn Street of Chicago. And they were walking together, and as soon as this went through that Dearborn Street and the whole Indian contingent came, they all rushed towards Sanjay Dutt, and Mr. Obama was left behind for a moment, and they were shouting they were calling out Munna Bhai because MBBS had just released then. So Obama was not the president then. Obama was not the president, yeah. He was the Hi, governor, Ranbir. yeah. पर कहानी सच्ची है. तो ये ऐसी कहानी है जो यकीन नहीं आता कि सच्ची. आप देखेंगे जब फिल्म, अभी ट्रेलर पहले देखेंगे फिर फिल्म, तो यू वोंट बिलीव हाफ द स्टोरीज. Hi Ranveer, Ravi from ABP News. रणवीर, संजय दत्त की जो कंट्रोवर्शियल लाइफ है, जो अनयूजुअल लाइफ है, उसके बारे में सब जानते हैं और बहुत कुछ जो लोगों को नहीं पता इस फिल्म के जरिए पता चलेगा. बॉलीवुड से नाता होने के कारण आपको शायद ज़्यादा पता होगा संजय दत्त के बारे में, लेकिन ऐसे कई एस्पेक्ट्स होंगे जो आपको भी नहीं पता रहे होंगे. जब अभिजात और राजू ने वो स्क्रिप्ट आपको सुनाई, तो क्या आपका रिएक्शन था? कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसने आपको शॉक किया संजय दत्त के बारे में जान के? उस बारे में बताइए. पूरी स्क्रीन प्ले एक्चुअली, द होल स्क्रिप्ट शॉक मी बिकॉज जैसे आपने कहा कि मैं एक अलग संजय दत्त को जानता हूँ. यू नो, नोन हिम एज अ फैमिली फ्रेंड. ही इज ऑलवेज ट्रीटेड मी एज अ यंगर ब्रदर. आई हैव आल्सो बीन अ फैन. बट मैंने वो साइड का संजय दत्त देखा, यू नो, खलनायक, बिग एक्शन हीरो, द काइंड ऑफ स्टाइल आइकॉन ही इज, कैसे उसके बाल थे, यहाँ वो क्रॉस पहनता था, कैसे कपड़े पहनता था, मैं उससे वाकिफ था. बट देन व्हेन आई रेड द स्क्रीन प्ले, देन यू रियली अंडरस्टैंड कि उसकी लाइफ जर्नी क्या थी. दैट वाज रियली शॉकिंग टू मी. सो आई थिंक एवरी सीन, यू नो, हिज होल ड्रग फेज, how he came out of it, how he fought that phase at such an early age, the passing of his mother 2 days before his premiere, 2 or 3 days before his premiere, you know, his controversy with terrorism, his controversy with the gun, his relationship with his father, with his best friend,
with the women in his life, everything, everything was quite shocking to me. Ki how can a man have so many lives in one life? I'm 35 today. By the time he was 18, I think he had lived 5 times what I could ever live in my life. So really, it was quite something. It was a screenplay sent from heaven, his life. Good afternoon, this is राजू Vikram. सर आपसे एक सवाल है कि सर जो स्टोरी टेलर होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऑब्जेक्टिव रहे, क्योंकि आप संजय दत्त के बहुत अच्छे दोस्त भी, आपने कई फिल्में बनाई हैं, तो ये प्रेशर कितना था आप पे कि आप ऑब्जेक्टिव रहें और उसको सब्जेक्टिव होकर ना देखें सब्जेक्ट को, और ऑडियंस के साथ ऑडियंस को ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये फिल्म पेश करें? पहली बात तो ये है कि ये फिल्म बनाने का हम पे ऊपर कंपल्शन नहीं था, हमसे कोई नहीं कह रहा था कि फिल्म बनानी है आपको, तब आपको ये इशू होता है कि एक्चुअली मैं कह रहा था कि मत बनाओ. हाँ, इनफैक्ट सो जैसा मैंने सबसे कहा कि एज फिल्म मेकर्स, स्टोरी राइटर्स, हम लोग बड़े ग्रीडी होते हैं. जब हमको ऐसा लगता है मटेरियल जो बहुत इंगेजिंग है, हम उस किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं. तो कंपल्शन नहीं था. जब हमने कहानी सुनी तो हमने कहा ये तो बनानी चाहिए. और संजू के सामने हमने सबसे पहली चीज़ ये रखी कि संजू, वी वांट टू मेक दिस, बट वी वांट, डू यू हैव द करेज? जैसे आप हमको कहानी सुना रहे हो, वो पर्दे पे अगर हम बताएंगे तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी. तो दैट्स व्हाई से संजू इज अ ब्रेव गाय. मुझे नहीं लगता कोई एक्टर ऐसा करेगा कि अपनी जिंदगी खोल के रख दे और बोले कि बनाओ. तो संजू इज बीन करेज. उसने अभी तक पूरी फिल्म देखी नहीं है. मैं कई बार बोलता हूँ कि आके देख लो, अभी क्या जाने रिलीज पे देखूंगा. तो वो किस आदमी में ऐसा करेज होगा? सो वो प्रेशर था ही नहीं कि कुछ time of release, and your last 3 films have all been blockbusters. So, does this add a pressure to you to also keep the box office element in mind? And considering that, like you said, you cannot add anything since it is a biopic and it's a different monster? If you say pressure, yes. It's not only this. Every film, you are under pressure. More for, actually, I would say, how people would like the film. All of us, I think, who make films want appreciation. So you want your films to be liked. So that pressure is always there. And I don't know what one can do to say the box office the figures will out there will increase. We really can't do. We have to make a film which we like, which has to come. We really can't judge who will like what and start. The moment you start doing, say, okay, this is, somebody will like this, somebody will like that, then you're not making an honest film. So you have to believe in the film you're making and make it. We never know. We have no idea how this will do. Nobody has any idea how the film will do. All you can say is make a film which you like and hope for the best. See, आज आप बोलते हैं, बहुत बड़ी बात आपने कही. जब मुन्ना भाई MBBS हमने बनाई थी तो किसी ने खरीदी नहीं वो फिल्म. रेडी फिल्म किसी ने नहीं खरीदी. लोगों ने कहा कॉमेडी चलती नहीं. मेरे को बोला कि जैसे बोलता है मुन्ना भाई, बोरीवली के आगे किसी को समझ नहीं आएगा. तो उस वक्त हमने, इससे पहले वो फिल्म रिलीज हुई, मैंने राजू को बुलाया, मैंने कहा एक और बना. वो नहीं चली थी, तुझे याद है राजू? वो फिल्म चली नहीं थी और मैंने तब लगे रहो, मैंने कहा एक और बना. तो हम देखिए, हमारी चल जाती हैं फिल्में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चलाने के लिए फिल्म नहीं बनाते हैं. याद लिख लीजिए. When I first met Vinod sir, he had taught me this one thing. He had shown me on his softboard there was a quote of Ingmar Bergman, and there were 3 commandments. And I'm sure I've repeated this, I'm repeating this, but it's so important when a question like this comes through. The commandments were, the first thing was, you will entertain. That's the primary responsibility of a filmmaker, that you will entertain. The definition of entertainment can be broad, it can be kinglier. But the commitment to pacing, to engage your audience has to be there. That's the first thing. Second thing is, you will not sell your soul when you entertain. So for entertainment, you cannot cheapen yourself and you can't move away your citizens' convictions as a citizen. You have to hold on to your convictions and then entertain. And the third thing is, you'll treat each film as if it is your last film. So that's the commitment with which you have to make that movie, believe in it, and you shouldn't regret it if you die after having made it. And these 3 things are the ones that we still try to cherish and remember. It's not always possible, but we try that. Mr. Irani, also, Ranbir, one more question, please. Ranbir, what I wanted to ask you is that, like you said, even Vidhu sir had said, but I don't want to play Sanju. This was first in your mind, how would I will play Sanju? Now that you have done it and the difference cannot be spotted, which of these 6 chapters in Sanju's life was the most difficult for you to portray?
Difficult was, which I didn't expect, was the young Sanju, because there was a lot of facets in his life that we had to show. You know, the drugs, coming out of drugs, his, his mother's death, and all of that. And I think the most fun was the Munna Bhai phase. That phase of Sanjay Dutt was a lot of fun, so I enjoyed doing that. Mr. Hirani, hi, this is Atika Ahmed Faruqi here. Hi, this is Atika here from Rishte Cineplex and Colors, here on your left. एक शेर है जो संजय दत्त की लाइफ को शायद बहुत अच्छी तरह से इनकैप्सुलेट करता है कि ये जबर भी देखा है, तारीख की आंखों ने, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई. टू एयर इज़ ह्यूमन, उन्होंने कई गलतियाँ की जिसका सिला उन्हें मिला. अब मुश्किल ये होती है कि दो तरह की फिल्में बनती हैं, एक है मैरी कॉम, दंगल, दूसरी तरफ वो फिल्में भी बहुत अच्छा करती हैं जो पूरी तरह से नेगेटिव किरदारों पे बनी होती हैं. हमने कई अंडरवर्ल्ड के नेगेटिव किरदारों पे ऐसी फिल्में देखी हैं, लेकिन इनकी शख्सियत ऐसी है कि हमको मालूम है कि इनमें ये ऐप थे या ये गलतियाँ थी. डिस्पाइट दीज थिंग्स इनको लोगों ने बहुत पसंद किया. आपने अभी बताया अमेरिका का पूरा इंसिडेंट. ऐसी फिल्म लिखते वक्त उसका स्क्रीन प्ले, कैरेक्टराइजेशन और ख़ास तौर से जो क्लाइमैक्स होता है, जब लोग जाएं ख़ास तौर से यंगस्टर्स इस मूवी को देखकर घर, तो क्या मैसेज लेके जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत इंस्पायर करती है यूथ में ख़ास तौर से. राइटिंग में इस बात का किस तरह से ख्याल रखा आपने? अभिजात, you want to answer that? राइटर नहीं, मैं इसका पहले संक्षिप्त रूप में बता दूं कि जो भी कहानी ये लिखते हैं उसका सबसे पर्पस, पूरी कहानी पढ़ के सिर्फ एक सवाल मैं पूछता हूं कि ये कहानी क्या कह रही है. क्योंकि हमने बहुत कम फिल्में बनाई हैं, लेकिन हर फिल्म में हमने कुछ ऐसा कहा है जो आपने उर्दू बोला, मैं आपको बंगाली सुनाता हूं. वो कहता है चित्तो जिथो भय शून्य उच्चो तिथो क्षीर. ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, थोड़ी उल्टी पुल्टी बंगाली है, लेकिन उसका मत है जब चित्त में भय नहीं होता है तब उसका जो शीर है माथा ऊंचा रहता है. हमारे पे भय नहीं, हम आपको पूछते हैं, सीधी बात कर रहे हैं हम लोग. आप हंसते हैं, कौन बोलेगा, कौन हीरो बताएगा आपको अपनी लाइफ के बारे में, बताइए. हमको पता है, आपको पता है, इसने बताया. तो हम आपको क्लियरली ये बात बोलते हैं कि सबसे ज़रूरी कहानी में क्या है, कि कहानी कहती क्या है. हमारे भय नहीं है हमारे मन में कि हमारी चलेगी फिल्म, नहीं चलेगी. हमारा चित्त जो है बिल्कुल सीधा खड़ा है, क्योंकि हम बहुत अच्छी बात कहेंगे फिल्म में, पर फिल्म में जो हम कहने जा रहे हैं आप मेहरबानी करके फिल्म देख के देखिए कि हम क्या कह रहे हैं. हाय, दिस इज कीर्तन. हाय रणवीर, राजकुमार जी सर, नवभारत टाइम से परेश रावल जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? रणवीर, रेखा खान, नवभारत टाइम से आप सबको मेरा नमस्ते और बहुत बहुत बधाई. बहुत ही कमाल का टीज़र है और फिल्म भी, मतलब ये बता रही है कि फिल्म भी बहुत इंशाल्लाह अच्छी होगी. रणबीर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, एक बायोपिक, वो भी एक ज़िंदा इंसान की, एक एक्टर की, बहुत ही चैलेंजिंग होता है. कभी आप पर अगर किसी तरह की बायोपिक बनने की बात हो तो आप उसके लिए कभी, क्योंकि आपके ज़िंदगी में भी बहुत कुछ, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, तो आप कभी अपनी ज़िंदगी पर बायोपिक बनाने के लिए राज़ी होंगे, कंफर्टेबल होंगे? मैं राज़ी हूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी इंस्पायरिंग है. मैं एक्चुअली बहुत बोरिंग इंसान हूँ. मैं काम करता हूँ और घर पे बैठता हूँ. तो बहुत ही एक एग्जिस्टेंशियल काइंड ऑफ पिक्चर होगी. जैसे कोई बिग बॉस कैमरा किसी ने लगा दिया है और ये काम पे जाता है, घर आता है, सो जाता है. तो अगर कोई बनाना चाहता है, ठीक है, बनाए, आई वोंट माइंड, बट आई डोंट थिंक वो चलेगी या उसमें कोई मैसेज होगा. हेलो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, परेश रावल जी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं, तो सर उनके बारे में कुछ बताएंगे, क्या उनका रोल है? परेश रावल जी. हाँ, परेश जी दत्त साहब का रोल कर रहे हैं, सुनील दत्त जी का. और अब आप देखिए, मैं अगला टीज़र, जो अगला ट्रेलर आएगा, आप उसमें आप पूरी कास्ट को देखेंगे. परेश जी ने सुनील दत्त साहब का रोल किया है. विकी कौशल हैं जिन्होंने इनके दोस्त का रोल किया है. मनीषा जी हैं, मनीषा कोइराला, जिन्होंने नरगिस जी का रोल किया है. दिया इज़ मान्यता, एंड there's सोनम, there's अनुष्का. आई थिंक मैंने लाइफ में पहली बार इतनी हीरोइंस के साथ काम किया है. संजय दत्त पे फिल्म बना रहा था ना. Raju sir here. आप उनका रोल देखिए. अभी मैं can't really describe. He's done a fantastic job. Raju sir, how much fiction has been added to the movie? How much of fiction element have you added to the movie? No, I don't think we've added fiction, but we can say
sometimes you do need to dramatize something, or if you think it's a funny scene, you need to make it a little more funny because हम तो situation सुनते हैं, हमको really पता नहीं उनके बीच में dialogue क्या हुआ था. तो कोशिश पूरी फिल्म में यही की गई कि actually fact पे बनाई जाए. We would have dramatized or made it funny or made it more emotional. Those kind of efforts are there, which happen in every biopic. But in this film also toned down. Many things were dramatized, many things were toned down. This was a tough one. For instance, the Obama story was incomplete because after I checked the story and I went to Sanju and I showed him the paper and I said that, I'm blown away. So this must be the biggest icon that you must have ever interacted with. So he thought about it and said, no, I think that would be Nelson Mandela. So who is going to believe all this? So our film had to have its own kind of realism. And we had to collapse certain characters into one, etc., etc. So it's dramatization at that level. Because you also have to compress it's like a 55-year journey. You can't say it in 2 hours, 30 minutes. So काफी कुछ compress हो जाता है, काफी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, और कई चीजें collapse करनी पड़ती हैं उस ढंग से. And also because we didn't want any controversial stuff in the film. So what we have done is presented, जैसा मैं कह रहा हूँ कि what are we saying in the film? पहले वो ज़रूरी है. Once that message is clear, then the whole story revolves around that message. That's what we want to do. Hello everyone. Ranbir. भूषण जी आप जवाब दीजिए. आइए यार, तू मेरे को Hello, sir. इतने आगे जवाब Hi. दे ना. Over इसको here. भूषण को पूछो ना, इसको सब पता है गानों के बारे में. आजा भूषण, मेरी कुर्सी पे बैठ के जवाब दे दे. आ यार, तेरे सवाल पूछ रहे. पूछ ले भैया उसको, इधर ही है वो. आ बैठ, जवाब दे. कैसे गाने इसने सारे बता दे कैसे. 10 दे ना गाने. बहुत बढ़िया गाने हैं, बहुत अच्छे गाने, पुराने गाने नहीं हैं. नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि सब नए गाने हैं, क्योंकि जिस तरीके की फिल्म है उसमें आप पुराने गाने यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ बीन शॉट ऑन मीन संजय दत्त. Vidhu Vinod, sir, so you just mentioned that you have to tone down certain things and certain. So you just mentioned that Yes. you had to tone down certain things. Was it the bad phase of his life that you have debated? Will you please see the film? I will send you a free ticket. Because if I tell you everything, then why am I? This is a teaser. Then the trailer will come in, which will reveal more. Then the movie will come in, which will reveal everything. So please see it. Hello, sir, everyone. उन्हें दस देती story, the picture कौन देखेगा? On your left, over here. Yeah. Hi, my name is Kajal. I'm from India Today. And I would like to ask a question to all of you. Recently, Saroj Khan has made a statement defending the casting couch in the Bollywood industry. So what are your thoughts, all of you, if you could You know, answer? my wife worked for India Today. That's an amazing question coming from India Today. What do you think our view should be? My comment on this, I've never faced it. So if it's there, it's the worst kind. You cannot take. राजू जी और रणवीर दोनों से ये सवाल था, जब संजय दत्त अभी जो क्लिपिंग आपने दिखाई उसमें कहा कि मुन्ना भाई मुझे लेकर बनाना, मतलब संजय दत्त इतना डर गए हैं आपके परफॉर्मेंस को देखकर रणवीर कि वो सोचते हैं मुन्ना भाई कहीं आपके साथ ना बना ले. तब आपको कैसा लगता है जब ये कमेंट आता है? ये खुशी की बात भी होती है और क्या एम्बैरेसमेंट भी होता है? और राजू जी आप क्या उनको आश्वस्त करते हैं कि नहीं मैं आप ही के साथ बनाऊंगा? मुझे 100% पता है कि ये जोक था, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट था नहीं. Munna bhai is Sanjay Dutt. There can only be one Sanjay Dutt. I am trying to portray a character which is Sanjay Dutt. Nobody will ever try to portray a character which is me. That's the difference. So Munna bhai will always be Sanjay Dutt. Nobody else. तू ऐसा करना कुछ जिस पे तेरे पे पिक्चर बने. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Ranbir, All right. we'll take this. I mean, how was it easy? हाँ जी. How many meetings? I can't hear you, ma'am. How many meetings did you have with Sanjay to? How many meetings? And was it easy? Of course, it was very easy because he's a very giving person. I met him a lot, spent a lot of time with him. But then I understood, even Vidhu sir himself had told me that apart from knowing him as a human being, now everything is in the script. You know, that's the guy you want to portray. Sanjay Dutt, to relive when he was 18, to relive when he was 21, will probably be harder for him. So just to kind of understand his mind, his soul, him as a person, was the homework for me. And then I stuck to the script.